Hello coders, this is the tutorial number 12 and we will discuss about the ternary operator. तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट करते हैं tut12.cpp and our boilerplate. So ternary operator इसको कमेंट आउट कर देते हैं. It is used for as an extension of if else statement. So इफ हम अपने पास कोई एक कंडीशन है जिसको या तो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, जिसके लिए अपन को ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं. सो here if we have here any condition and here the ternary operator that represents by the sign of interrogation question mark, and here the condition that is true, here the true condition, sorry, true result and a column, and here the false result and semicolon. So यहाँ पे कोई कंडीशन होगी एंड दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर एंड यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो जब ये कंडीशन इज ट्रू, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू देन दैट्स आउटपुट इज going to execute, and if the condition is false then that results are getting executed. So for example we have if a simple example, if int temperature लेते हैं, temperature and C in temperature. If so temperature is a condition, temperature is greater than 25, greater than 20, okay, and ternary operator, here the condition C out, if condition is true, temperature is greater than 20, then it is hot, and the column, and if condition is false then C out कर दो, it is cold and semicolon. So एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को और ओके, तो टेम्परेचर, मैंने टेम्परेचर की नाउ इट इज करेक्ट. So enter the temperature is 12, so it is cold. If temperature is 21, it is hot. If temperature is 20 करें 20, then it is cold because we have the condition temperature is greater than 20. So 20 से ऊपर टेम्परेचर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, then it is hot, else it is cold. So thank you for watching this video. मिलते हैं next video.